children, now today it is the last video of chapter climate. In my previous videos I have taught you the entire chapter in detail. I hope I am able to make this chapter a bit easier for you all. Okay, और कोई भी problem है, you please do share with me your problem. Write in the comment box if you want any part of the chapter to be explained again. Okay, let's do now, do you know, in text question answer which are in between the chapter, exercise questions and map skill. So let's begin with do you know. Okay, the word monsoon is derived from the Arabic word mausim. आपको मैंने समझाया था the Arabian traders were the first one to observe these monsoon winds. कैसे ऑब्जर्व किया था कि किस तरह से उनकी शिप्स इंडिया की तरफ आ रही हैं एंड कोई विंड्स हैं जो हर साल इन द बिगिनिंग ऑफ जून में आती हैं और दे आर कमिंग कोइंसिडेंटली एवरी ईयर, दे आर कमिंग इन द सेम मंथ. तो उन्होंने बोला है तो कुछ ना कुछ ऐसी विंड्स हैं जो हर साल हम ऑब्जर्व करते हैं. तो उन्होंने इस विंड्स का नाम दिया था मौसम, जिसका मतलब था सीजन. ओके, मॉनसून रेफर्स टू सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड्स. ये आपको बताया था कि मॉनसून्स आर सीजनल विंड्स. दे आर लैंड टू सी इन समर्स एंड सी टू लैंड इन विंटर्स. Then in certain places there is wide difference between day and night temperatures. You know that in Rajasthan, when the day temperature in Thar desert rise up to 50 degrees Celsius and night temperature drop down to 15 degrees Celsius. तो रेंज ऑफ टेम्परेचर देखो बेटा, रेंज ऑफ टेम्परेचर मतलब डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम एंड मिनिमम ड्यूरेनल रेंज इन अ डे. तो राजस्थान observes very great difference between day and night, and this difference is hardly felt in Andaman and Nicobar or Kerala because they are close to the equator. Okay, and Rajasthan being very far and moreover it is a desert. ठीक है, so वहाँ दिन का temperature 50 और रात का 15. This is also quite strange. कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स बेटा बहुत बार आपको समझाया था. इट इज द फोर्स विच इज जेनरेटेड बाय द मूवमेंट ऑफ द अर्थ. मूवमेंट के बदले रोटेशन ऑफ द अर्थ, एंड दिस रोटेशन ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिफ्लेक्टिंग द डायरेक्शन ऑफ द विंड्स to its right in the northern hemisphere and to its left in the southern hemisphere. So the winds which deflect their direction, it is particularly due to the force which is generated by the rotation of the earth. This is called Ferrel's law also. Jet streams. Jet streams are fast blowing winds at very high altitude up to 12,000 meters above sea level. These winds are very fast. Their speed in summers is 110 km per hour and winters is 184 km per hour. So बहुत तेज चलने वाली हवाएं हैं in the narrow atmosphere, upper atmosphere up to 12,000 meters above sea level. Western cyclonic depressions coming from the west, originating from the Mediterranean Sea. दो चीजें याद रखिए. Western cyclonic depressions originates from Mediterranean Sea. They travel towards India and enter India from west and northwest, which gives rainfall to west and northwestern part of India in winters. And this winter rainfall is very highly beneficial for rabi crops or winter crops. Next is intertropical convergence zone, ITCZ. ITCZ is the belt which lies near the equator. Number one, this is the belt where northeast trade winds and southeast trade winds converge. ये मिलती हैं. This is a low pressure area and winds converge and rise up and gives heavy rainfall in this belt.
तो ITCZ में डरना नहीं है. ITCZ is Intertropical Convergence Zone, which lies somewhere close to the equator. Here northeast and southeast trade winds converge, rise and give rainfall to this area. Next is El Nino. El Nino, as I have told you in while teaching also, El Nino is a Spanish word which means the baby Christ. Okay, so what is El Nino? Actually, towards the western coast of Peru in South America, पेरू के वेस्ट कोस्ट में एक कोल्ड ओशियन करंट चलती है. Once in 2 to 5 years, this cold ocean current, जिसका नाम Peruvian current है, it gets replaced by counter Peruvian current, which is a warm ocean current. So this change of cold ocean currents into warm ocean current once in 2 to 5 years, इसको हम काउंटर पेरुवियन करंट बोलते हैं. इसका भी इफेक्ट इंडिया के मॉनसून्स पर पड़ता है, जिसे हम एल नीनो कहते हैं, बेबी क्राइस्ट कहते हैं, क्योंकि जनरली ये दिसंबर के समय पर ये काउंटर करंट देखी जाती है. सो दिस वाज अबाउट ऑल द डू यू नोज which are there in the chapter. So now let's discuss in text question answers. Page number 27. Find out why the houses in Rajasthan have thick walls and flat roofs. Thick walls and flat roofs to protect them from extreme summers, very high temperature. Just now we have discussed 50 degrees Celsius. So they have thick walls so that it works like a insulator. ओके, तो थिक वॉल्स होने के कारण उनकी जो एक्सट्रीम गर्मी है उससे वो उनको प्रोटेक्शन मिलता है, और विंटर्स में जो एक्सट्रीम कोल्ड वेदर होता है उससे भी इनको प्रोटेक्शन मिलता है. और फ्लैट रूफ का एक फ़ायदा है कि एज वी नो इट रेन्स वेरी लेस इन राजस्थान. दे कलेक्ट रूफ वाटर, जिसको हम कहते हैं रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. आराम से वो जितनी भी बारिश होती है उसको वो हार्वेस्ट करते हैं एंड देन दे यूज दिस वाटर इन द ड्रायर मंथ्स. सेकेंड क्वेश्चन, same page. Why is that the houses in the Tarai region and in Goa and Mangalore have sloping roofs? It is because of excessive rainfall. Very high rainfall areas these are. हमने जैसे डिस्कस किया था वेस्टर्न घाट्स के वेस्टर्न साइड में है, विंडवर्ड साइड में है, बहुत बारिश होती है, तो रीज़न है टू स्लाइड ऑफ रेन वाटर easily. These here the houses have sloping roof and moreover they also do rain water harvesting. ठीक है, वहाँ बारिश बहुत ज़्यादा होती है रेनी सीजन में, बट फॉर द ड्रायर मंथ्स दे ऑल्सो नीड दिस रेन वाटर हार्वेस्टिंग. Why houses in Assam are built on stilts? You know what are stilts? Stilts are like these pillars. First there are 4, 5, 6 pillars and then houses built on the pillars. Because as we know, Assam is very heavy rainfall area. And moreover, river Brahmaputra gets flooded every year. To keep away the flood water, to save themselves from flood water, their houses from flood water, they make houses on the stilts. Why most of the world's deserts are located in the western margins of the continents in the subtropics? जितने भी बड़े बड़े डेजर्ट्स हैं, आप अपना थार डेजर्ट ही ले लीजिए, वेस्टर्न साइड में है. इसी तरह से अटाकामा डेजर्ट है, कालाहारी डेजर्ट है, जितने भी डेजर्ट्स हैं वो सब वेस्टर्न साइड में है कंट्रीज के. इट इज़ बिकॉज ऑल द कोल्ड ओशियन करंट्स दे फ्लो नियर द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ द कंट्रीज, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स. और कोल्ड ओशियन करंट्स कैसी होती हैं? कूल एंड ड्राई. ठीक है, वो टेम्परेचर कम करती हैं, दे डू नॉट हैव मच ऑफ मॉइस्चर, दे डू नॉट ब्रिंग एनी रेनफॉल टू द नियर बाय कोस्टल एरियाज. सो
This the reason is clear, because of cold ocean currents which flow near the western margins of the continents. Okay, beta, so this was about the in-text question answers. Now let's discuss exercise questions in detail. Okay. First of all, some MCQs given in the beginning. Choose the correct answer from the 4 alternatives. Which one of the following places receives the highest rainfall in the world? So as I have told you, in Meghalaya, Moss syndrome, MM, Moss syndrome in Meghalaya. The wind blowing in the northern plains in summers is known as, is it Kalbesakhi or Lu, trade winds, or none of the above? We know that the local winds which blow in the northern plains is Lu, which are very, very hot and dusty winds. Which one of the following causes rainfall during winters in northwestern part of India? Gets rainfall from number 1, cyclonic depressions, or from retreating monsoon, or from western disturbances, or from southwest monsoons. So winter rainfall in north and northwest is from western disturbances. Monsoons arrives in India approximately in early May, early July, early June, early August. It is early June. Which one of the following characteristics characterizes the cold weather season in India? Cold weather कैसा होता है? Warm days, warm nights. Warm days, cold nights. Cool days, cold nights. Cold days, warm nights. So option is second, warm days and cold nights. Answer the following questions briefly. What are the controls affecting the climate of India? जिसने वीडियो फर्स्ट वाला अच्छे से देखा होगा उसे पता है. What are the climatic controls? Climate controls क्या क्या थे? Number 1, latitude, altitude, pressure and winds, distance from the sea, ocean currents and relief features. So ये 6 only you have to name them. Okay. Second, why does India have a monsoon type of climate? It is because India lies in the belt of monsoon winds, that is 20 degree north to 20 degree south. हमारा एक मेजर पोर्शन इस बेल्ट में आता है, तो that is why we have monsoon type of climate. Which part of India does experience highest diurnal range of temperature? अभी मैंने बताया था diurnal means in one day, range means maximum minus minimum. कौन सी ऐसी स्टेट है जहां पर रेंज ऑफ टेम्परेचर इन अ डे इज हाईएस्ट? इट इज राजस्थान. 50 डिग्री in the daytime and 15 degree at night time. तो 15 minus 15 is equal to 35 डिग्री सेल्सियस का रेंज है यहाँ पर. तो इस रेंज को क्या, रेंज की डेफिनेशन क्या होती है? मैक्सिमम माइनस मिनिमम. किसी भी चीज़ की रेंज निकालनी है हमको, मैक्सिमम माइनस मिनिमम. अगर हमको टेम्परेचर की निकालनी है विद इन अ डे, इट इज़ कॉल्ड ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर. तो मैक्सिमम टेम्परेचर इन अ डे एंड मिनिमम टेम्परेचर इन अ डे माइनस कर दीजिए, दैट इज ड्यूरेनल रेंज ऑफ टेम्परेचर. Which winds account for rainfall along the Malabar coast? याद है मालाबार कोस्ट कौन सी होती है? मालाबार का मतलब क्या होता है? हमारा वेस्टर्न कोस्ट. दो कोस्ट है ना हमारी, इधर वाली मालाबार और इधर वाली कोरोमंडल. तो जो मालाबार कोस्ट है इसको कौन रेनफॉल दे रहा है? साउथ वेस्ट मॉनसून्स. व्हाट आर जेट स्ट्रीम? हाउ डू दे अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ इंडिया? तो जेट स्ट्रीम की डेफिनेशन पहले भी बताई है कई बार. जेट स्ट्रीम्स आर फास्ट ब्लोइंग विंड्स एट वेरी हाई ऑल्टीट्यूड ऑफ 12,000 meters above sea level. These winds have a speed of 110 km per hour in summers and 184 km
per hour in winters. Now, how do they affect the climate of India? The western disturbances which come in India in winters are brought in the country by westerly jet stream. ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस जो विंटर में हमको बारिश देते हैं और जो पहले बताया कि दिस रेनफॉल इज हाईली बेनिफिशियल फॉर राबी क्रॉप्स, ये कौन लाता है? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स. ओके. और अक्टूबर नवंबर में जो ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स आते हैं हमारे ईस्टर्न कोस्ट में, दैट इज ब्रॉट इन बाय ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम. डिफाइन मॉनसून्स. Monsoons are seasonal winds. They are known for reversal of their direction. They are sea to land in summers and land to sea in winters. Why monsoon is considered as a unifying bond? Monsoons are considered as unifying bond because monsoons are responsible for giving us a cycle of seasons year after year. Number 2, all our festivities, all our agricultural calendar, all our plant life, animal life depends on this monsoons. All the farmers, not even farmers, we common people also wait eagerly for the monsoons. Why does rainfall decrease from east to west in northern plains or in northern India? East, the Bay of Bengal branch of the monsoons, of the southwest monsoons, reach Meghalaya, Assam and gives heavy rainfall in Monsoon in Meghalaya, heaviest rainfall area. And the Himalayas deflect their direction towards the west, and in the northern plains they turn toward the west, and the amount of rainfall decreases as they move towards the west. Okay, so rainfall in northern India or northern plains decreases from east to west. Give reasons. Seasonal reversal of wind direction takes place over the Indian subcontinent. Give reasons को बहुत ध्यान से समझना है बेटा. The seasonal reversal of wind होता है Indian subcontinent में. Why? Because of change in temperature and pressure conditions, because of differential heating and cooling of water and land. है ना, तभी तो प्रेशर कंडीशंस बदलती हैं, और जैसे ही प्रेशर चेंज होते हैं डायरेक्शन ऑफ विंड्स आल्सो चेंजेस. The bulk of rainfall in India is concentrated over a few months. We know, yes, in India rainfall, maximum rainfall, 90% of its total rainfall we get from June to mid-September. It is from southwest monsoons. Okay, so the reason for this rainfall is southwest monsoons. The Tamil Nadu coast receives winter rainfall. Yes, Tamil Nadu is the only state which gets rainfall from northeast trade winds. Northeast trade winds are land to sea, and because they are land to sea, winters are dry in India. But for Tamil Nadu, when they are returning or they are traveling from land to sea, they get Bay of Bengal on the way. When they get they are blowing over the Bay of Bengal, they pick up moisture from the Bay of Bengal and hit the coast, the eastern coast of Tamil Nadu, giving good amount of rainfall in winters in Tamil Nadu from northeast trade winds, which are land to sea for rest of India, but for Tamil Nadu, sea to land. The delta region of the eastern coast is frequently struck by cyclones. Yes, the delta of Godavari, Krishna, Kaveri. Every year they are hit by the cyclones, tropical cyclones. These tropical cyclones originates from Andaman Sea and they travel towards eastern coast of India and give good amount of rain
and also destruction to these preferred targets of Kaveri, Krishna and Godavari. Parts of Rajasthan and Gujarat and the leeward side of Western Ghats are drought prone. ये तो क्वेश्चन में ही आंसर लिख दिया है. Yes, because they lie in the leeward side of Western Ghats. वेस्टर्न घाट्स के लीवर्ड दूसरी तरफ ये सारे एरियाज हैं, राजस्थान, गुजरात और अरावलीज भी हैं. अरावलीज की भी जो लोकेशन कैसी है, पैरेलल. ये आपने शायद नहीं पढ़ा है. हाउ आर द अरावलीज. अगर मैं यहाँ पर जल्दी से आपको थोड़ा सा बताऊं तो ये है बेटा अरावलीज. ठीक है, अरावली. So the southwest monsoons, when they enter India, they get Western Ghats here, but here they go parallel to Aravallis. Aravallis are parallel to the direction of southwest monsoons, and that is why they do not stop southwest monsoons, and simply these winds pass over this area and strike Himalayas later on. So Rajasthan, Gujarat and this part, Deccan Plateau, this area gets less rainfall क्योंकि ये तो लीवर्ड साइड में आ गया है. ठीक है, पूरा का पूरा. और यहाँ पर अरावलीज की लोकेशन पैरेलल टू द विंड्स हो जाती हैं, सो दे गेट वेरी लेस रेनफॉल. Describe the regional variations in climatic conditions in India with the help of suitable examples. Regional variations, हम कितने एग्जाम्पल दे सकते हैं रीजनल वेरिएशन के. नंबर 1, when in summer season when the temperature rises up to 50 degrees Celsius in Rajasthan, it is 20 degrees Celsius in Kashmir. गर्मियों में जब पूरा इंडिया में 40, 45 और राजस्थान में 50 डिग्री सेल्सियस है, then at that time Kashmir has 20 degree Celsius. तो एक तो ये बहुत बड़ा वेरिएशन, रीजनल वेरिएशन विद इन द कंट्री वी कैन सी. Number 2, during winters when the temperature is in minus, in Dras, Siachen, minus 45, minus 50 degree Celsius, उस समय केरला में very comfortable 20 to 25 degree Celsius. तो नॉर्थ में माइनस में टेम्परेचर चल रहा है और साउथ इज वेरी कंफर्टेबल विद 20-25 डिग्री सेल्सियस. ठीक है. Next example we can give of coastal areas. In coastal areas there is hardly any range of temperature. They have very milder summers and milder winters. Whereas in between the country the climate is extreme. Summer temperature 40-45, winter temperature drop down to 4-5 degrees Celsius. So we have this variation also in temperature in coastal areas or in between the country. फिर हम rainfall का example दे सकते हैं. When southwest monsoon are giving rainfall to entire country, but Tamil Nadu does not get rainfall from southwest monsoons. When winters में Tamil Nadu gets rainfall from northeast trade winds, rest of India is dry. So rainfall, maybe we can see variation. One more variation, when all over the country it rains but it snows in the Himalayas, particularly in the winters when the western disturbances bring rainfall from north and northwestern part of India. At that time it snows in the Himalayas. So these 5 points are sufficient. Mechanism of monsoons. मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून्स में हमको वो 5-6 पॉइंट्स दोबारा से लिखने हैं. हमने कितने पॉइंट्स पढ़े थे बुक में? दैट फर्स्ट ऑफ ऑल द मॉनसून्स आर कन्फाइंड बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ टू 20 डिग्री साउथ. द मैकेनिज्म ऑफ मॉनसून्स के लिए वी हैव टू डिस्कस फॉलोइंग पॉइंट्स. नंबर 1, द डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग ऑफ लैंड एंड वाटर results in different pressure conditions which are responsible for monsoons. Number 2, intertropical convergence zone. This zone in the summers it lies in the northern plains. यहाँ पर north east and south east trade winds converge होती हैं and
This is a very strong low pressure area which easily deflect the direction of the winds, southeast trade winds, and they enter India from southwest direction. Then third point you can write about the Madagascar. The east of Madagascar develops high pressure area. High pressure area in the east of Madagascar, which are responsible for Indian quick arrival of monsoons in India. The Tibetan plateau gets intensely heated. High temperature, low pressure. So the winds again move towards the low pressure area. So Tibetan plateau is also responsible for arrival of monsoons in India. Then the role of jet streams. रोल ऑफ जेट स्ट्रीम्स बहुत बार आपको बता दिया हमने. वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग इन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस and easterly jet streams are responsible for tropical cyclones. Okay, so you have to write all these points in mechanism of monsoons. Then give an account of weather conditions of cold weather season. Cold पूछे, hot पूछे, advancing पूछे, retreating पूछे, हमको हर एक में 5 to 6 points लिखने आना चाहिए, क्योंकि इतने अच्छे से आपको समझाया गया है. सबसे पहले हम चलो कोल्ड वेदर सीजन पूछा है तो मंथ्स के नाम लिखेंगे. नंबर 1, that cold weather season remains in India from mid-November to February. December and January are the coldest months. Number 2, temperature decreases from south to north. Number 3, in this period, northeast trade winds blow in India, which are land to sea. That is why most of the India remains dry during winters, but Tamil Nadu gets winter rainfall. Number 4, characteristics लिख देना है. Warm days, cold nights, clear sky, low humidity, all these are the features of cold weather season. Then हाँ, एक point जो बहुत important है, western disturbances. Western disturbances enter India during cold weather season originating from Mediterranean Sea, coming towards India, giving light rainfall to north and northwestern part of India, which is highly beneficial for Rabi crops. ठीक है, this this little amount of rainfall is known as Mahavat in local language. Give the characteristics and effects of monsoon rainfall in India. Monsoon की क्या characteristics हैं कि monsoon की पहले कितना पीरियड वो आती हैं, फ्रॉम जून, अर्ली जून टू मिड सितंबर. नंबर 2, their duration 100 to 120 days. Monsoons are very uncertain in their arrival and retreat. Their arrival and retreat is not fixed. Okay, they are very uncertain. When monsoons come in India, they come with heavy rainfall, thundering and lightning, which is called burst of monsoons. Monsoons are known for their wet and dry spells. They can be rainy continuously for 1 week, and again the next week can be of dry spells. So this is called break in monsoons. Okay. The rainfall is very unevenly distributed. There are regions where monsoons are responsible for floods. There are regions where monsoon is very weak and drought condition prevails in that part of the country. What is the effect of monsoon in India? Our entire agriculture depends on monsoon. Our all underground aquifers, underground water depends on monsoons. The land gets recharged due to monsoons. So monsoons may be responsible for floods in some part of the country,
and drought in some other part of the country. Okay, so this is about all the exercise questions which are given in NCERT books. लेकिन बेटा NCERT books में ये नहीं कि अगर कोल्ड वेदर सीजन दिया है तो मुझे बाकी नहीं पढ़ना है. हमको समर मीन्स हॉट वेदर सीजन की भी 5-6 पॉइंट्स आने चाहिए, एडवांसिंग मॉनसून्स के भी और रिट्रीटिंग मॉनसून्स के भी. एक्सरसाइज क्वेश्चंस पूरा चैप्टर कवर नहीं करते हैं, ठीक है. इसीलिए आपको डिटेल से समझाया गया है इन माय प्रीवियस वीडियोस सो दैट यू कैन इजीली राइट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी सीजन. ओके बेटा, नाउ द लास्ट टॉपिक इज मैप स्किल. एरियाज रिसीविंग रेनफॉल अबव 400 सेंटीमीटर. ये हमको वैसे ही मालूम होना चाहिए. हमने कैसे पढ़ा था? द वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स एंड नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया. यही दो एरियाज हैं जहां मॉनसून डायरेक्ट हिट करते हैं. तो वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स के लिए हम ये पोर्शन लगा देंगे, केवल वेस्टर्न पार्ट ऑफ वेस्टर्न घाट्स, और यहाँ पर नॉर्थ ईस्ट में ये वाला पोर्शन और ये मेघालय वाला एरिया. सो दिस इज द एरिया विच गेट्स हैवी रेनफॉल मीन्स अबव 400 सेंटीमीटर. लेस रेनफॉल के लिए एक हो गया हमारा ये नॉर्थ ईस्ट पार्ट पूरा लद्दाख का, फिर हमारा पूरा वेस्टर्न पार्ट, थार डेजर्ट पूरा नहीं कर देना कि पूरा राजस्थान, केवल वेस्टर्न पार्ट ऑफ थार डेजर्ट, और एक ये एरिया है, इस एरिया को हम बोलते हैं लीवर्ड साइड. इतना सा एरिया ये भी लीवर्ड साइड है, तो इट ऑल्सो रिसीव्स वेरी लेस रेनफॉल. तो लेस रेनफॉल के हमारे 1, 2 और 3 एरियाज हो गए, और हैवी रेनफॉल के भी हमारे 1, 2 एंड what is this western part of western Ghats. Last is the direction of southwest monsoons. तो साउथ-वेस्ट मानसून की डायरेक्शन हमें मालूम है, ये साउथ है और ये वेस्ट है. तो कमिंग फ्रॉम साउथ वेस्ट डायरेक्शन. तो आप देख रहे हैं कि इस तरीके से हमें साउथ वेस्ट मानसून की दोनों ब्रांच बनानी है. नीचे इनका ये साउथ वेस्ट मानसून, अरेबियन सी ब्रांच, बे ऑफ बंगाल ब्रांच. इसे पूरे इंडिया में कवर कर दीजिए, ठीक है. इस तरीके से यहाँ पर ये यहाँ जाएंगे, और यहाँ जाने के बाद फिर इनका डायरेक्शन ऐसे करके मुड़ेगा, ठीक है. इस तरीके से ये मुड़ेंगे. ओके, यहाँ पर जाने के बाद ये इस तरीके से मुड़ जाते हैं. यहाँ से ये इनके साथ मर्ज होती हैं, ठीक है, एंड गिव्स रेनफॉल टू एंटायर कंट्री. So this is the direction of south west monsoons. हमेशा याद रखिए, कई बार बता दिया है, the winds get their name from the direction they blow. तो ये साउथ वेस्ट इनका नाम है, तो हम समझ गए हैं इनका नाम साउथ वेस्ट क्योंकि ये साउथ वेस्ट से इंडिया में आ रही हैं, ठीक है. सो बेटा, with this we have finished our map skill also. Okay, so beta, I hope you have understood this chapter completely with all exercise questions, all map skill. We have finished this chapter, and thank you so much and have a very wonderful day.